एक point पे they were calling me the queen of advertisement, you know. But I said that I want to act now. ये Netflix पे आने वाला है, इसमें श्वेता त्रिपाठी के साथ एक्टिंग करनी है, इसमें ताहिर के साथ एक्टिंग करनी है, तो वो उस सब के लिए तो टाइम ही नहीं मुझे मिला सोचने का. Dawn, Anchal, I'm Anchal Singh Moharma. Your growth as an actor since Dekhi is mind-blowing. After watching Ye Kali Kali Aankhein, can't decide whether to love you, hate you, or fear you. Incredible performance. Hats off and keep rocking. Thank you so much. But इन्होंने जो बात बोली है, I really, this is a real compliment for me. ये आपकी आंखों के बारे में जो बात हो रही, वो भी I think that is something which is लगता है इंश्योरेंस आपको करानी पड़ेगी अभी आंखों की मेरे ख्याल से. मैं करवा लेती हूँ इंश्योरेंस आंखों की. Achha, we've taken a few comments Okay. of how people are responding to your particular character. Let's see. There are too many of them, but I like let's this. take a few. Let's take a few. These are YouTube comments. This is Shubham Chaudhary. The way Purva has been portrayed by Anchal Singh is so perfect. Can't take my eyes off her. So freaking good. Hope she gets all the praises she deserves. That's really so sweet of Shubhankar. Another thing that I want to add to this is that this character is very relatable to people right now. I'm able to understand this कि इस लड़की का जो जर्नी है वो लोग इसलिए भी समझ पा रहे हैं क्योंकि वो तो फ्रॉम द पॉइंट वो एस्टैब्लिश कर दिया कि बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड है, लेकिन उसने बचपन से ही पावर देखी है. शी हैज ग्रोन अप इन दैट एनवायरनमेंट. शी डजंट नीड टू प्रूव टू एनीबॉडी दैट शी इज पावरफुल. वो किसी पे हुक्म नहीं चलाती है और ना ही उसको अपना महकूम बनाना चाहती है विक्रांत को. She is a very normal, a humble human being at the end of the day, and a girl madly in love. So that factor I think is very relatable, and that's why I'm getting a lot of love of the people. So thank you. This is Rashi Mehta. The moment Purva appeared on screen, I knew she's gonna be the one whom I'll take back with me from the show. One of the finest web shows from Netflix. Thank you. How do I react to this? I'm so glad that we could do this. This is Anand Desai. I never binge watch series, but this one was rare and too exciting. Finished all the episodes in 5 to 6 hours. All the actors have done terrific job, but Purva Aka Anchal was the best. I wish I can learn Zumba from her. Must watch. Waiting for season 2 desperately. Thank you so much, Anand. Zumba के लिए तो मेरे खुद classes करी थी. So I was unfortunately, I came into this project just 6 days before we had to start shooting. Fortunately, because I didn't have time to think कि ये कितना amazing बड़ा role है, इसके ये Netflix पे आने वाला है, इसमें श्वेता त्रिपाठी के साथ एक्टिंग करनी है, इसमें ताहिर के साथ एक्टिंग करनी है, तो वो उस सब के लिए तो टाइम ही नहीं मुझे मिला सोचने का. I had to just quickly get into the skin of the character. So that was one beautiful thing that happened. But thank you so much, Anand. But Zumba के लिए तो मैंने classes ली थी वो 6 दिनों की preparation में, तो next season में आपको भी ले लेंगे. अगर होगा जो होना चाहिए, please Netflix. Barkha Gupta. I think I see season 2. I think मेरे ख्याल से must होना because दिलचस्प बात है. You are predicting it. No, you are predicting it. It will happen. Then maybe no. it will happen. देखिए मैं कौन हूँ तो predict करने वाला, लेकिन जो शुरुआत है ताहिर के कैरेक्टर की, तो वो तो क्लाइमेक्स में है ही नहीं. इसका मतलब ये है कि वो सीजन 2 से ही आया. I'm not going by that logic. I'm going back with the logic कि आपने मुझे जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे आपने कहा था that your character is very nice and आपने मेरी बहुत तारीफ करी थी, तो एंड वो एक्चुअली में शो के बाद मुझे बहुत तारीफ मिली भी है. So I'm going by that logic. Please. I'm glad that you take my word, but I think this is one series that everyone would love to see the season 2 of. All right, let's take Barkha Gupta. Started watching the show for Tahir, liking it because of Anchal Singh. Tahir is also superb. Must watch, guys. You've made a lot of fans.
you've made a lot of fans because in spite of the fact that you've been around for the last 7-8 years, you've done some big advertisements and a lot of other stuff, but इस शो से मुझे लगता है कि एक तरीके से आपकी डेब्यू हुई. Absolutely. A wide cross section of people started knowing you now. Absolutely. And that is why it is so humbling, and that is why I value the love today, because I have got this love after waiting for a very, very long time. And it is just not the love that is important. What is important is that people are praising my work and then giving me love, you know. Because when I came into the industry, a lot of people told me कि अच्छा तुम जो ads करती हो ना, या जो तुमने बाकी के काम किए, तुमको उसके लिए ना बहुत PR करना चाहिए, because तुम बहुत popular हो जाओगे, तुम्हें लोगों का बहुत प्यार मिलेगा. So I told them कि you know, I feel कि लोगों का प्यार आपको organically मिलना चाहिए. उसके लिए मेहनत अगर करनी पड़ जाए इस तरह से, तो पता नहीं वो work कर रहा है कि नहीं कर रहा. मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा काम मिले जिसमें मैं as an actress अपने आप को prove कर सकूं, मुझे थोड़ी validation मिले और ढेर सारा प्यार मिले. So finally वो मुझे मिल रहा है, तो I am very emotional about it. So thank you. That's amazing. Okay, so you've done graduation in political science. Yeah. Does it help in playing a character like this, which is having a lot of politics in the backdrop? No, actually, wow, this is an interesting thing actually. I did political science honors for different reasons. I wanted to prepare for civil services examinations, you know, so I was taking that very seriously. Simultaneously, I was studying for human rights also, because at one point of time, I've always wanted to be a part of UN, you know, that was my dream at one point of time. But इस सीरीज में कहीं पे भी हमने पूर्वा को politically involved होते हुए नहीं दिखाया है. But I sense this from the way the character is, that if she had to, she would make a very good politician also. Very, very good. But she understands how the dynamics of his father's business is working. So she knows that. She's involved in that. If any of the people they die, so she's affected by that. So she is clued in. वो जिस दिन आएगी तो तूफान मचा देगी वो. अगर वो आएगी तो वो बहुत अच्छे से तूफान मचा सकती है, क्योंकि उसने अपने डैड का भी एक्सपीरियंस देखा है, उसका खुद का भी इंटेलिजेंस है, एंड शी हैज अ चार्म, यू नो, इन द वे कि वो जो भी कहती है, वो उस कैरेक्टर में अपनी तारीफ नहीं करी, मैं कैरेक्टर की तारीफ करी. पूर्वा के अंदर ही एक वो कैरेक्टर में बहुत चार्म और एनिग्मा है. So I think she could make a very good political person. So और अगर एनिग्मा की बात करें तो काइंडनेस है किरदार में, लेकिन it can be ruthless as well. Yeah. I think just what you need. It can be ruthless. I think also when you see people who have power since ever, वो ऐसे हो जाते हैं. Their whole demeanor is very calm. वो बिल्कुल भी बदतमीज नहीं होते. Doesn't affect them. बहुत अदब से बात करते हैं, बहुत इज्जत से बात करते हैं, बट इस तरीके से बात करते हैं कि आप उनके साथ मेसअप नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपको वो देते रहते हैं साइंस की. इफ यू मेसअप ना, देन मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे आसपास बहुत से लोग हैं, वही आपको सिखा देंगे. तो आई एंजॉयड द फील ऑफ दैट कैरेक्टर, यू नो, बिकॉज मैं रियल लाइफ में बहुत मतलब आई एम वेरी केयरफुल अबाउट थिंग्स, यू नो, ये तो नहीं बोलना, वो तो नहीं बोलना, बट ये कैरेक्टर के थ्रू आई लिव दैट लार्जर देन लाइफ सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग, यू नो. नो डेफिनेटली. वो अदब की जब आप बात कर रही हैं, तो जब आपके इंटरेक्शन आपको विजेंद्र काला जी के साथ में हो रहा है, वो कहते हैं कि पापा बोलो ना बेटे, पापा बोलो, एंड शी इज नॉट वेरी कीन इन द सेंस कि दैट मैं तुम्हारे बेटे से मोहब्बत करती हूँ, एंड आई एम not really keen to have too much to do with you. But आपका जो reaction आता है वो दिलचस्प है. You know, it's rather disinterested that I'm having issues of my own and you are trying to ensnare me into another relationship. क्योंकि वो इज्जत देगी उस टाइम पे, उसके वो अभी उनकी मतलब फादर इन लॉ बने भी नहीं है, बट वो पूरी इज्जत देती है. इनफैक्ट इससे मुझे याद आया कि वो एक और सीन है, दिस इज बहुत स्पॉइलर तो नहीं हो जाएगा if I say after. Anyways, I will not say when does it happen, but there is a scene that is taking place in the car and she calls her father Akhiraj and वो बात करती है कि बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं सूर्यकांत मतलब पापा से पूछती हूँ. So she understands कि अभी मुझे किसको कितना importance या कितना एक देनी है. So that class in that woman is very very important. In fact वो एक सीन काट दिया गया, वो एडिट में नहीं है. उसमें था कि जब वो सॉन्ग चल रहा ना, हम तो वो परदेसी वाला सॉन्ग, सॉरी आई एम सो बैड विद लिरिक्स,
हम तो ठहरे परदेसी, that that does it. तो उसमें एक वो सीन था that she is sitting and वो पुलिस फोर्स आती है, एसएसपी आते हैं, and I was sitting. So sir said that she will get up and she will greet everybody. वो बदतमीज नहीं है, वो सबसे बहुत इज्जत से बात करती है, उसको पता है उसकी पोजीशन ऑफ पावर क्या है, लेकिन ठहराव है उस लड़की में. So this class is very interesting. No, it is definitely. Okay, this is Ajit Dobriyal. Big thanks to OTT digitalization for giving opportunities to such talented actors like Anchal, Tahir, Shweta. This wouldn't have become possible in theaters. A genuine talent is now hopeful to make a career in acting. Thank you so much. I mean, I'm filled with so much happiness and so much of self-belief right now, and I also hope that I get more opportunities and I can show what I have been learning since so many years so far. Okay, so he talks about the OTT and the digitalization. This is fascinating. जिस तरीके का belief दिखाया गया है आपके अंदर, आप 7-8 साल से आप हैं. You've done a film in Sri Lanka which has done huge businesses, especially in Sri Lanka, and I think it has done well in 20 countries for that matter. Right. लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आपने साउथ में भी आपने काम किया है, लेकिन जैसे बॉलीवुड में बहुत बार क्या होता है कि एक सर्टेन टैग्स लग जाते हैं. Correct. और शायद प्रेफरेंसेस जो हैं बहुत बार जो टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है मे बी एट टाइम्स प्रूव करने में अपने आप को. लेकिन यहाँ पर आप एक शो में आप आ रही हैं, आपको जो प्रेजेंटेशन जो किया गया वो एक रॉकस्टार तरीके से किया गया, एक सुपरस्टार तरीके से किया गया. कोई उसमें किसी तरीके का कोई वो नहीं किया गया किसी और के शोल्डर्स पे पिकी बैक करके चलते हैं और इसको हल्के तरीके से प्रेजेंट करते हैं. वो कहीं पर भी नहीं, वो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है. सो वो जो कॉन्फिडेंस जो ओटीटी से या फिर डिजिटल कंटेंट से जो आ रहा है, और एक्टर्स जो हैं वो अपने आप में एक स्टार्स बनते जा रहे हैं. आज के टाइम पे आप पूरे इंडिया में फैल चुकी हैं, दुनिया भर में आप फैल चुकी हैं आपके किरदार के जरिए से. डू यू फाइंड दैट फैसिनेटिंग? Talking about it right now seems very fascinating because today I've got an opportunity and in a way I've been able to prove something and I've been getting love from the people. So right now when I look back to my journey, when I look back and count the number of years I have been here and waited and meanwhile learned a lot. But right now, as I said, it's nice, but पहले इतना अच्छा नहीं लगता था. पहले लगता था कि opportunities क्यों नहीं मिलती हैं. In fact, I was always open to auditioning. मैंने हर चीज के लिए ऑडिशन किया, इस रोल के लिए भी ऑडिशन ही किया था. पर मुझे पहले लगता था कि मुझे ऑडिशन का तो चांस मिल जाए. But then what is important is that you need to find the right channels, the right routes, the right people. But why should they also believe in you right now? So it is, I think, a blessing of the God that I landed up with a great team because मैंने सिद्धार्थ सर के साथ पहले अनदेखी किया. अनदेखी में there was an important character that I was playing and then I got this today. और इसका बहुत बड़ा थैंक्स OTT के लिए ही है because एक तो OTT में there are so many subjects being made, there are so many topics that are being touched upon, so we need lot of content, we need lot of actors, we need lot of new people. तो उस डिमांड की वजह से I think people such as me get a chance to at least come forward and show that this is what I've got. But apart from that, even when I was doing ads, ad world में मुझे मेरा बहुत नाम बन गया था. एक point पे they were calling me the queen of advertisement, but I said that I want to act now. But then they say कि नहीं, ये तो ad करती है. Ads are very different from movies. Ads are very different from OTT. उसमें acting different है, इसमें acting different है. So to get a break, that took a lot of time. But trust me, Faridun, right now, मुझे कोई भी regret नहीं है. कोई भी अब लग नहीं रहा कि इतने साल wait करना पड़ा because मुझे लग रहा है if this is what the universe was getting me at, I could have waited for another 5 years. Not a problem. No, you don't have to wait for another 5 years now. अभी आप देखिए 1-2 हफ्ते में कैसे आपकी दुनिया बदलने वाली. Let's take a few Twitter comments. These are tweets from people on Twitter. This is Ashish Kumar Singh. Thoroughly enjoyed ये काली काली आंखें. Always great watching Saurabh Shukla. Super impressive Anchal Singh.
well complemented by Tahir Rajbasin and very talented Shweta. Series most certainly left me wanting for more. Wow. Netflix, Siddharth sir, सुन रहे हैं आप? All right, let's take a few more quickly. This is Kinaji. Binge watch Ye Kali Kali Aankhein on Netflix. Worth watching. Impressive work from the cast, especially Anchal Singh. Looking forward to second season. ये जो आपका segment है ना, ये तो बहुत ही अच्छा segment है. This is my favorite segment of all the interviews I've done so far. You know, so मैंने rapid fire अभी आपके साथ में किया हुआ था, so I did not want to repeat it. So that is why I thought that ये हम लोग करते हैं, because ये जो जनता की आवाज है वो पहुंचना जरूरी है, और कुछ थोड़ा सा अलग भी हो जाएगा जो हमने पहले आपके साथ में किया है. All right, this is Venkatesh Bajaj. Completed Ye Kali Kali Aankhein, loved it, very gripping, keeps you engaged. Good Hindi series after long time on Netflix. Tahir Rajbasin is in great form as always, but my favorite performance of this series is Anchal Singh as Purva. Very dark yet convincing. Venkatesh Bajaj, कुछ कहना चाहेंगे Bajaj साहब? Thank you so much Bajaj जी, आपने मुझे बहुत खुश कर दिया है. और you know, ये जो लोग बोलते, मैंने ये बहुत टाइम से मैं सुनते आ रही हूँ कि you know, सक्सेस से दिमाग खराब हो जाता है, लोग बदल जाते हैं, ये हो जाता है, तो नहीं क्या कुछ हम सोच लेते हैं, you know, as people who want to do something. क्योंकि हमें बहुत से लोग बोलते कि एक दिन जब तू फेमस हो जाएगी ना, तब तो तू फोन भी नहीं करेगी, लोग ऐसा बोलते. लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एक तो इतनी जो एक्नॉलेजमेंट और जो इतना प्यार मिल रहा है, अभी तो ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. इट्स वे बियॉन्ड दैट आई हैड आस्क्ड फॉर एंड सीक्ड फॉर. आई वांटेड इट, बट इट बी लाइक दिस, ये मुझे नहीं पता था. बट जितना भी मैं पढ़ रही हूँ और देख रही हूँ ना, मुझे और भी हम्बल फील करवा रहा है, और मुझे रियलाइज हो रहा है कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इतने लोगों की नजरें हैं मेरे पे, तो मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकती हूँ. सो इसीलिए मैंने ऑलरेडी अपनी डिक्शन पे वर्क करना शुरू कर दिया. स्टार्टेड, मुझे रीडिंग पसंद नहीं है, बट मैंने बुक्स रीड करना शुरू कर दिया. That's amazing. I'm already watching few master classes, because I feel that responsibility that wow, I can make somebody happy, I can move somebody, I want to do this, I always wanted to do this. और अगर वो अभी समय आया है, then I want to make the best out of it. So thank you. देखिए, एक बहुत दिलचस्प चीज सामने आ रही है, और मैं तो सिर्फ फैक्ट्स जा रहा हूँ कि now Tahir is a fantastic actor, and this is one of his best works ever, and he has some really fine works in the past. But जिस तरीके से लोग बहुत बार प्रेफरेंस बेस्ट परफॉर्मेंस में इस सीरीज में आपको कर रहे हैं, वो एक डेफिनेटली दिलचस्पी का एक आई थिंक पॉइंट है. श्वेता हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट जो एक डिस्कशन पूर्वा के अराउंड हो रहा है, दैट इज समथिंग व्हिच इज really impressive. Of course, it is such a compliment and a confidence booster for me also, because to be honestly, to be sharing the same screen space with such actors, brilliant actors such as Tahir and Shweta, Saurabh, so they have already made their marks, you know, we already know their potential. So unke samne aate ho aap, to it's easy to not get noticed, you know. So I'm happy that I'm not only noticed but being loved and appreciated, and I think a lot of the credit goes again to the storytelling and to the way this character has been written. क्योंकि मैंने पहले भी काम किए हैं, लेकिन वो उस तरीके से नोटिस नहीं हो पाए, क्योंकि एक कैरेक्टर में भी जान होनी चाहिए, यू नो, उस कैरेक्टर में भी एक कुछ पागलपन, एक दीवानगी होनी चाहिए. सो इसमें वो है बात. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट सिद्धार्थ सर ने मुझे एक चीज बोली थी कि जैसे तुम रियल लाइफ में हो ना, वो मुझे बोलते तुम बहुत इनोसेंट और ऑनेस्ट लगती हो, तो उसको मत छोड़ने देना, बिकॉज दिस कैरेक्टर इज नॉट कनिंग, शी इज नॉट a villain or a negative personality. She's a nice girl, but with a twist, you know. So I'm happy that people can see all of that today, and they are showering the love on this. Right? No, definitely. This is Jay.
Started watching Ye Kali Kali Aankhein a while back, and Anchal Singh, I'm Anchal Singh, has me positively hooked onto this show. The darker shades of the series are delightful. Thank you so much. If I get the darkness and the lightness both in the series, what more could I have asked for? Thank you so much. This is Dawn. Anchal, I'm Anchal Singh Mohtarma. Your growth as an actor since Andekhi is mind-blowing. After watching Ye Kali Kali Aankhein, can't decide whether to love you, hate you, or fear you. Incredible performance. Hats off and keep rocking. Thank you so much. But इन्होंने जो बात बोली है, I really this is a real compliment for me, and it's these moments that make my day. If he feels that I have gone better with Andekhi, that's all we aim for. Every day we need to keep bettering our skills, you know. So मैं मेहनत कर रही हूँ. अगर वो दिख रही है तो yay! Thank you. All right, this is Sitanshu Khanna. Center of attraction, I'm Anchal Singh. Ma'am, loved your performance. It made me feel so much hatred towards Purva, and loved your performance as Teji as well. Waiting for season 2 of Ye Kali Kali Aankhein and Andekhi. Terrific performance by the star cast and production. Dialogues were outstanding. Thanks, Mr. Khanna. Mr. Khanna, thank you so much. But आपने ये जो इतने compliments जो दिए ना, मैं अकेली इसकी हकदार बिल्कुल भी नहीं हूँ. हमारे dialogues वरुण मडोला ने लिखे हैं. इतनी amazing story हमारे सिद्धार्थ सर और अनाथा मैंने ने लिखी है. मैंने बस उसको खेला और enjoy किया है. And thank you अगर आपको पसंद आ रहा है. और पूर्वा की तो जिंदगी का मरकज सिर्फ विक्रांत ही है. So thanks to Vikrant also. All right, Ankit Sahu, while watching the series Ye Kali Kali Aankhein, I realized that your acting was so intense that at some point I started hating Purva. That shows the quality of acting, the way you have done it. It's just wow. At last, I want to say that हमारी दोस्त बनोगी Purva? जिस दिन विक्रांत मेरा दोस्त बन गया, उस दिन मैं आप सबकी दोस्त बन जाऊंगी. नो बट जोक्स अपार्ट, थैंक यू. ये फ्रेंडशिप का ऑफर बिल्कुल एक्सेप्टेड है. और यू नो हमने लास्ट टाइम शाहरुख सर की बात करी थी. इस चीज का प्लीज रेफरेंस मुझे फिर से देना पड़ेगा. जब मैंने बाजीगर देखी थी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शुड आई लव विक्की मल्होत्रा और शुड आई हेट विक्की मल्होत्रा. एंड अगर इफ आई कैन गिव इवन 1% of that emotion to somebody कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझसे प्यार करे कि मुझे हेट करे ना, तो मेरा दिन बन गया. मतलब मेरी लाइफ बन गई है. Thank you. All right, let's quickly take a few more comments. They're really nice. Khalid Parvez, the bandwagon called Ye Kali Kali Aankhein has only one name written all over it, and that is I am Anchal Singh. What a powerhouse performance. Only she deserves to be the Purva of everyone's dreams. Awaiting season 2 desperately. Thank you so much. This is Dr. Swadeep Mishra. Binge watch Ye Kali Kali Aankhein. Phenomenal performance by I am Anchal Singh. She is lovely and scary at the same time as Purva. Possessive and obsessive with every word she speaks. There's an emotion attached. Brilliant. Waiting eagerly for the second season. Thank you, Mishra ji. It's please give as much love as you're giving to Purva. And actually मैं उनको ये बोलना चाह रही थी कि आप मिश्रा जी प्लीज इस चीज का प्रे करिए कि सेकंड सीजन आए और नेटफ्लिक्स को और सिद्धार्थ सर को टैग करते जाइए कि हमें सेकंड सीजन चाहिए. Okay, so Anchal, I'll quickly take 2 more. There are many comments, but I'll take 2 more. This is Arun Singh, just finished Ye Kali Kali Aankhein, and my reaction is wow. I'm Anchal Singh. I've never seen you before, but after watching this, I'm becoming big fan of yours. Unbelievable performance. Thank you. I'm a fan of you all for showering that love on me. Thank you. This is Mitra. Ye Kali Kali Aankhein is a beautiful Indian painting portrait with eyes of I am Anchal Singh. She's bang on with her expressions throughout the show, giving weightage to the name Ye Kali Kali Aankhein. Tahiraj Basin and Batarawara are outstanding with their performances. So ये आपकी आंखों के बारे में जो बात हो रही वो भी आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज लगता है इंश्योरेंस आपको करानी पड़ेगी अभी आंखों के मेरे ख्याल से. मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो
मुझे काफी लोगों ने बोला है कि तुम्हारी आंखें बहुत डिफरेंट लगती हैं, तुम्हारी आईज थोड़ी इंडियन नहीं लगती हैं, बहुत कमेंट्स मिले हैं और मुझे लगा है कि अब इन्हीं आंखों की आज तारीफ हो रही है. सो the lesson learned is that never feel bad about anything, because the universe is conspiring for something else only. All you need to have is self belief, and you need to just keep working on yourself. अगर वो करते जाओगे ना, everything is going to be fantastic. So मैं करवा लेती हूँ इंश्योरेंस आंखों की.